Hello students, in previous part we have discussed about the circulatory system in cockroach. Circulatory system. We have already discussed about circulatory system, but we have forgotten some words. Circulatory system. As we know that in cockroach, the heart is a tubular structure and which contain 13 chamber. Suppose this one like structure. Each chamber consists a triangular shape cells, or you can say that fan like cell. Each chamber consists triangular shape cell or fan like cells. These cells help in contraction and relaxation of the heart chamber. हार्ट के प्रत्येक चैम्बर के दोनों तरफ फैन लाइक और ट्रायंगुलर शेप की सेल होती हैं. दीज सेल्स आर नोन एज अलेरी सेल. एंड व्हाट इज द रोल ऑफ अलेरी सेल्स? एज वी नो दैट ब्लड सर्कुलेशन इन कॉकरोच फ्रॉम पोस्टीरियर टू एंटीरियर पार्ट. These cells help in to contract and relaxation of the heart chamber. We have forgotten about the function of the Alleri cells. Now again the next excretory system in cockroach. Excretory system in cockroach. As we know that cockroach are omnivores. They can feed off plants product as well as insects. Omnivores. The waste substances they are secrete in the form of uric acid. They secrete waste substances in form of uric acid. Thus the cockroaches are known as uricotelic. So they are uricotelic, and the process in which any organism excrete uric acid, that process is known as uricotelism, and organism are known as uricotelic. There are three types of different cells which help in to excrete the waste substance in cockroach. Three types of cells which help in excretion the waste substances in cockroach, and these are the three different cells: Malpighian tube, urate bodies or urate cell, urate bodies, or you can say that urate cell, and third one is neurophyte cell. Neurophyte or nephrophyte cell. These are the three different cells which help in excretion in the cockroach. As we have discussed about Malpighian tubule in digestive system, the Malpighian tubules are present in the junction of midgut and hindgut. They are found at the junction of midgut
and hindgut. They are present yellow bodies 100 to 150 in numbers. They are yellow in color and 100 to 150 in numbers. These cells are found in bundles. These cells are found in bundles, which makes the 6 to 10 bundles. Means ये जो सेल होती हैं 100 से 150, ये 100 से 150 सेल बंडल में प्रेजेंट होती है. लगभग 100 से 150 सेल का ट्यूब का कितने बंडल बनते हैं? 6 to 10 बंडल्स. Malpighian tubules किस कहां से प्रेजेंट थी? Suppose this is the midgut, and as we know that the hindgut is broader than the midgut. This is the junction between the midgut. This is the part of midgut, and this one is hindgut. At the junction of midgut and hindgut, there are many finger-like structure cells present. And they are numbered in 100 to 150, but they are found in bundles. So these are known as Malpighian bodies or Malpighian tubes. These cells are found in bundles. When we dissect these cells, we can see these cells in a bundles. There are some large cells, and many ciliated cells present at the surface of the inner side. Whenever we dissect these cells, we can see the inner structure of these cells. These are the large cells which contain nucleus. These large cells are Malpighian cells. At the inner surface there are many cilia. What is the role of cilia? They collect the waste body from all over the body. पूरी बॉडी से वेस्ट सब्सटेंस को कलेक्ट करते हैं. कलेक्ट करके कहाँ लेके आती हैं? ये हाइंडगट के अंदर इसको इंसर्ट कर देते हैं. और हाइंडगट से एलिमेंट के अंदर से तो वो वेस्ट बॉडी को एनल के द्वारा एक्सक्रीट कर दिया जाता है. दिस इज द रोल ऑफ Malpighian tubules. Suppose the waste substance is in the form of, when they excrete, in the form of uric acid. ये यूरिक एसिड के रूप में इसको सीक्रेट करते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? यूरिकोटेलिक. बट देयर आर सम अमोनियम आयंस और अमोनियाज waste also present in the cockroach body. These Malpighian tubules collect these ammonia waste from the different part and change into uric acid. Ammonium waste, these Malpighian tubules change into or convert into uric acid and excrete this uric acid into the hindgut, which is the part of alimentary canal, and at last this waste substance is secreted through the anal. So this is the role of Malpighian tubules. The second one types of cell are known as urate cells or urate bodies. These both are their storage bodies. इनको आप storage body भी कह सकते हैं. These are also storage body. The main storage body in these cells are fats. These urate cells are some desmoid structures. They collect the uric acid from the different parts. They collect uric acid from the different parts of the body of cockroach. As these cells are filled up, जैसे सेल filled up मतलब loaded हो जाती हैं, fill up हो जाती हैं, these cell comes near to the dorsal or ventral
लेयर, जो इसकी डोर्सल है जिसको टर्गम बोलते हैं वहां, या स्टर्नम जिसको वेंट्रल साइड बोलते हैं वहां कलेक्ट हो जाती है ये सेल, कुछ यहां आके कलेक्ट हो जाती हैं। और जैसे ही एक्सोस्केलेटन मतलब कॉकरोच के बाहर का एक्सोस्केलेटन जो छोटी छोटी जो इसकी लेयर है काइटिन्स की बनी हुई, जैसे ही उसको एक्सक्रीट करता है ये उसके साथ इन सेल को भी बॉडी से पास आउट करा देता है। मतलब लोडेड सेल जो यूरिक एसिड से फिलअप हैं उन सेल को भी एक्सोस्केलेटन के साथ अवॉइडेड कर देता है। मतलब पूरी बॉडी से यूरेट बॉडी या यूरेट सेल क्या करती हैं, यूरिक एसिड को कलेक्ट करती हैं। जैसे ही सेल पूरी लोडेड हो जाती है यूरिक एसिड से, दे कम्स नियर टू द सरफेस ऑफ द आउटर टुवर्ड्स द डोर्सल और वेंट्रल साइड। और जब डोर्सल और वेंट्रल साइड में आने के पश्चात जो कॉकरोच उसके बाहर की जो काइटिन की लेयर है, पतली जो लेयर है वो उतरती है, उस लेयर के साथ ही ये सेल भी एक्सक्रीट कर दी जाती हैं। न्यू सेल्स आर बोर्न इनसाइड द बॉडी। And same structure of the nephrophyte cells. They also the storage bodies. Storage body means they also store the uric acid. And just these cells also removed by the cockroach as the urate bodies. These are very smaller in size. Nephrophyte cell and urate bodies, yeah, urate cells are excreted or avoided by the cockroach with the outermost layer with exoskeleton. इनके बाहर के जो काइटिन की लेयर बनी थी पतली लेयर, वो जब उतरती है तो उस लेयर के साथ ही ये सेल उसके साथ चिपक जाती हैं डोर्सल साइड या वेंट्रल साइड में। उस लेयर के साथ ही ये भी बॉडी से एक्सक्रीट कर दी जाती है जिसके अंदर यूरिक एसिड फिलअप था। मोस्टली these tubes are the excretory unit in the cockroach. They help into excretion through the body, but mostly the waste substance is excreted by the Malpighian tubules.